गुरु ज्ञान प्रकाश घोष माने आमार गान दादू, माय गुरुजी, the legendary tabla maestro Pandit Shubhankar Banerjee, आमार शुभंकर काकू, राशिद काकू माने the one and only Ustad Rashid Khan साहब, and uncle जी, my north star, Ustad Zakir Hussain जी. Long before I knew them as prodigy, genius, legends, gods, absolutes, I knew them as my family because from the age of 2 or 3, I have them all around me. They practically brought me up. All of them have taught me how to fly fearlessly, dream limitlessly. This song is a tribute to them. Without them, I am a nobody. Without them, I would be lost. এটা কিছু করব না, একটা লাইন আমার যদি মনে থাকে, দেখছি আমি যদি মনে থাকে আমি গাইবো। আমি ফেরিওয়ালা, আমি ফেরিওয়ালা, আমি ফেরিওয়ালা, আমি ফেরিওয়ালা, আমি ফেরিওয়ালা, আমি ফেরিওয়ালা। কত রং বেরঙের সস্তা দামের, কত রং বেরঙের সস্তা দামের খেলনা বেচে খাই আমি ফেরিওয়ালা, আমি ফেরিওয়ালা। I was a couple of months old, and the first time I was taken out of home was when my parents brought me to Gandhadu. It's my name that now has become the name of the entire city of Kolkata. Everyone calls him Gandhadu, but I called him Gandhadu because he was all about music and he was my Dadu. Because Baba was like his son and he was Baba's guru to start with. He was a footballer. Ah. And a state level footballer. Really? Yes. He had lost one of his eyes playing football. So yeah, it was a stone eye. So that's when he shifted to music. Otherwise, he would have been a footballer. And I wouldn't have had Gandhan. So he was a tabla player. He played 9 kinds of Indian drums. Bapre. Which includes dholak, which includes naal, which includes khol, which includes kada nakada, and he made the first percussion ensemble called Drums of India. He's Gyan Prakash Ghosh, whose house in Kolkata was the home for all the doyens and the masters and the legends like Bade Ghulam Ali Khan, like Barkat Ali Khan Sahab, like who not. They used to come and stay at his place for days and weeks and months. And you have to understand when they are coming, they are not coming alone. They're coming with entourage of people, their disciples, family, cook. What are you saying? Ghee, chawal, biryani. And when they are coming, the entire city is going. Every day there's mehfil, every day there's 100 लोगों के लिए खाना बन रहा है. And every day there's this ustad coming to meet, मतलब उनके साथ 15 लोग. And Guruji, mane the way the world knows him, Gandhadu, was the home for all these people. They knew that हम जाके ज्ञान बाबू के घर में रह जाएंगे. ज्ञान बाबू का घर मतलब सबका घर. गाने वाले उनके स्टूडेंट्स हैं, तबला बजाने वाले उनके स्टूडेंट्स हैं, हारमोनियम बजाने वाले उनके स्टूडेंट्स हैं, कंपोजर्स उनसे इंस्पायर्ड है, लिरिसिस्ट उनसे इंस्पायर्ड है. And this thought that I said that classical music के बंदिश में से 10 में से 8 बंदिश में सास ननद मोरी जन्म की बैरन है, ये थॉट मेरा नहीं है, ये उन्होंने डाली हुई थॉट है. Because he wrote compositions like आग भूम आकाश पवन पानी बलिहारी तेरी मेहरबानी. He is writing a composition on the 5 elements of nature in Indian classical music context. He's the only one who must have written that. And then his teaching was like, you pick up any diary, open any page, I will teach you that. क्या बात? So whatever राग, difficult खट, उसका एक बंदिश जो कि मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने वो बंदिश सिखाई क्योंकि वो पेज मैंने खोला. This entire presentation of Rageshri is dedicated to my Guruji, Guru Gyan Prakash Ghosh ji. Sa ja ga ma ne ra ga ma da ga ga ma da ni sa ni da ma da ni da ma ni da ga ga ma re ni da ma la bu
Ran Dadu, I miss him now so much because of the calmness that I crave for. Because there's so much hustle, bustle, noise, so much happening. I think I miss him more when there's so much happening. And when I sometimes am tired and I need a space to go and say, "Mera bhal lag jana." For the world, for this generation of musicians, he has been an iconic musician, a fantastic, tabla player, skill, thought, some pioneering, thought processes, ideas. That is the musician self. That's something that the world has admired and seen. The person I saw, गाना सीखने के लिए आए थे शुभंकर काकू बाबा के पास और बहुत अच्छा गाते थे. अच्छा. बहुत अच्छा, मतलब उनके गाने के रिकॉर्डिंग्स भी है. सो आई स्टिल रिमेम्बर, जा रे जा उड़े जा रे जा, जा रे जा उड़े जा रे जा, পাখি তোকে কেন বেঁধে রাখি, মুক্ত হোক তোর দুডানা, যা রে যা উড়ে যা রে যা. He used to learn from anywhere and everywhere. क्या बात. And his processing was very independent. So he processed things in a very innovative way. अच्छा. And he used to listen to different kinds of music. So this process happened when I was a child. So he used to come home, everyone used to sit together, सब मिलके रियाज करना, बैठ के गाना गाना, कभी एंड हारमोनियम भी बजाते थे, गाना भी गाते थे, तबला भी बजाते थे. तो एक ऐसे अड्डा जब होता था ना, तो कुछ भी कर सकते. एंड बाबा बीइंग बाबा, आई एम ऑलवेज स्कैर्ड कि कब डांटेंगे, कब रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन. सो ही यूज्ड टू बी माई लाइक रेफ्यूज. कि डांट पड़ी तो शुभंकर काकू, अरे पुतुल तू इधर आ जा, दादा मैं इसको थोड़ा लेके रियाज करने के लिए बैठ रहा हूँ. रियाज तो घंटा, बस मुझे वो डांट से बचाना. आई कॉल्ड हिम अंकल, बट ही वॉज अ फ्रेंड लाइक पर्सन एंड ऑल्सो बिग इंस्पिरेशन. की रियाज करने के लिए, बैठने के लिए, ये करके देख, वो करके देख, यहाँ से मुखड़ा लेके देख, ये लयकारी, ये मैंने अभी बजाया, इसको रिस्पॉन्ड कर. सो दैट काइंड ऑफ चैलेंज दैट ही गेव मी. एंड देन that journey continued from singing with Baba, from playing Tanpura पीछे बैठ के. I come to center stage. The journey of life brings me there. And then Shubhankar Kaku sitting with me on stage and doing the same thing. Stage पे बैठ के कि he would play something and he would say, गाना 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 मजा आवे देख गा. And I always used to say, হবে না আমি পারবো না. না পারবি, গানা গানা. नई झुलनी की छैया बलम दोपहरिया बिता जाओ नई झुलनी की नई झुलने की नई झुलनी. There was certain mukhra experimentation, certain laikari experimentations that he always used to do. He loved that composition. Every time I sing, every time I do those laikaris, those mukhras, I can almost see him, I can almost hear his voice saying, kor maja have. So it's, yeah.
रात तक ऐ हो कब तुम बात। Every time he opened his mouth and sang, unbelievable, unbelievable. And today morning someone called me and someone said that I heard some of your recording. There's so much of Rashid ji that I could hear. मेरा कभी तालीम नहीं हुआ उनसे, वो कभी मुझे बैठा के ऐसे सिखाए नहीं जिसको तालीम बोलते हैं, कि उसका थॉट प्रोसेस शागिर्द के अंदर इंस्टिल करने वाली तालीम, वो कभी नहीं हुई। लेकिन ऐसा इम्पैक्ट था उनके गाने का। ऐसा कितनी बार हुआ है कि उनका गाना हुआ है, कहीं से बाबा सुन के आए और बाबा रियाज के लिए बैठे। दैट इंस्पिरेशन। कभी ऐसा हुआ कि बंदिश एक कुछ बाबा ने कहीं गाया, अगले सुबह राशिद का को वुड कम कि दादा वो बंदिश थोड़ा याद करा दो, उसका अंतरा नहीं समझ, वो क्या गाया तुमने, वो अंतरा याद करा दो। एंड दे टू बोथ विल सिट टुगेदर, सिंग एंड सिंग नॉट ओनली द बंदिश, देन इट विल गो फॉर आवर्स। कुछ ही वुड कॉल मी ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, ही वुड कॉल मी एंड से तेरा याद पिया गया है सुना, इतना छटपट क्यों कर दिया, थोड़ा धीरे क्या करना, थोड़ा ठहराओ, शांति नहीं, याद पिया गया लग रहा है उछल रही है। देन ही वुड सिंग एंड दैट फोन कॉल वुड गो फॉर हाफ एन आवर। एंड दिस इज नॉट द उस्ताद राशिद खान दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द अंकल, दिस इज द person who I had fun with. He used to be a fantastic cook, and he loved cooking. He loved feeding people. तो राशिद का वो खाना बना रहे मतलब सब लोग घर में खाएंगे। बाबा यूज्ड टू गो टू बाई चप्पल, तो अपने साइज़ का चप्पल, उससे 1 या 2 साइज़ छोटा राशिद का चप्पल, तो साथ में चप्पल खरीदे जाएंगे। राशिद काकू का कॉन्सर्ट होगा तो बाबा हारमोनियम बजाएंगे, बाबा का कॉन्सर्ट होगा तो राशिद काकू तानपुरा बजाएंगे। देन ऐसा मतलब यू अंडरस्टैंड कि जब एक बहुत इनसिग्निफिकेंट सी ऐसे बैठने वाली कोई, वो जो स्टेज पे बैठा हुआ राशिद काकू को मैंने सुना। And then comes a day when I sit next to him. The first concert he called me on stage ऐसे ही, I didn't even know. मेरा गाना था, उसके बाद उनका गाना था, suddenly he calls me on stage, ये आ जा इधर बैठ, ठुमरी गा साथ में। मैंने कहा कि क्या ठुमरी, कहाँ से, सुर कौन सा है, तुम्हारा सुर ऊपर है, मैं तो बी फ्लैट से गाती हूँ। अरे हो जाएगा तू बैठ ना। कौन सी ठुमरी मुझे नहीं पता, ये बुक खोल के देते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है जो गा रहे वो अलग है, और मैं बोल रही हूँ ये लिखा हुआ नहीं, अरे सुन के गाना, ये सब स्टेज पे चल रहा है। सो इट नेवर फेल्ट लाइक आई एम ऑन स्टेज विद उस्ताद राशिद खान, इट फेल्ट लाइक वन ऑफ दोज सेशंस जहाँ पे बाबा और वो बैठ के गाते थे। वैसे मैं भी बैठ गई ऐसे, मतलब वो जब मुझे देख के बोले कि अभी गा, अच्छा 2 लाइन मैं भी गा ली, ऐसा। मतलब इट्स नॉट लाइक singing a duet with, it's impossible in my head, it can't ever be a duet with Rashid Khan, like it can't be a duet with Baba. It'll always be a talim extended. I don't care whether it's on stage, I don't care whether there's audience or not. For me, I will be that girl, that small insignificant girl who would just sit there and will be like enamored by his voice. What a voice, what music. So I've always felt music and art form is a friend, is somebody who I can converse with, hang out with, relate to, and not be awestruck about, and have differences of opinion with, and enjoy having, big arguments with. And so that's what for me it is. Every day is a different learning day. You cannot be a master, you can only be a student. That's what my father said, just be a good student and you'll get by just fine. He's the only one who talking to whom never felt like talking to an Indian classical musician. Never felt like that. It felt like talking to someone who hears you,
who understands you, who's talking to you from you, who's seeing you from your perspective, who's not imposing anything to you, who's listening to you more than telling you, who's not judging you, who's not giving you rules, who's rather giving you liberty, freedom, and letting you be. That is very rare. That is very, yet he's a mentor, yet he's the absolute guideline that you can rely on, yet he's the safe space, yet he says it's okay to falter, yet he says that leap of faith is more important than being perfectionist. He's the only one who said falter, otherwise how will you know you're trying something new? He was trying to bring me out of the fear that drives me towards perfection. And he always pointed out, he always said that, Khushiki, I hear processed input in your music. I want to hear what you want to say. I know what I've lost when I went to California to see Uncle Ji the last time. He's a miracle. He's a magic that touched my life, my music, my thought process. Stage पे एक दिन होता, he had asked me, Beta, do you want me to play with you? And I still remember, I said, Uncle Ji, that's not what I want. I want you to be there as the person जिसको मैं सवाल पूछ सकूं. क्योंकि बहुत सवाल आते हैं, मुझे पता नहीं मैं किन से पूछूं. मैं जब भी सोचती हूँ मुझे आपसे पूछना होता है. तो आप मुझे बस उतना इजाज़त दे दीजिए कि मैं आपसे पूछ सकूं. And I used to send him mails, messages, call him, meet him. So he's been the North Star. He has been the guru that has taught me how to think. And when I'm lost, I just don't know how to think anymore, whom to ask anymore. So, through this song, I think I'm just creating a pathway for me to be able to interact with them somehow. आजू के गो मुरली बाजाई इतो कभु नहे श्यामराय इहार गोर बरणे करे आलो चूड़ाटी बांधिया के बांधिलो आजू के गो मुरली बाजाई ए तो कभु नहे श्यामराय कभी नई भोर जैसी, कभी शाम सी हंसी, कभी पवन सी सुहानी वो बहारों में बसी. नौ रंग में रंगी उसकी सादगी, गुनगुनी धूप में बूंद बरसात की, जैसे कोई कोयलिया गाए. सुनो ना कौन ऐसे गाए, जग भी संग गुनगुनाए.
जग भी संग गुनगुनाए। हाँ, कभी नई भोर जैसी, कभी शाम सी हंसी, कभी पवन सी सुहानी, वो बहारों में बसी। खिलते हैं मौसमें जिसकी आस में, ढलती वो जाए हर अंदाज में। खिलते हैं मौसमें जिसकी आस में, ढलती वो जाए हर अंदाज में। शर्म को ओढ़ के अपने लिबास में, शर्म को ओढ़ के अपने लिबास में, ढीठ तरंग सी लहराए। कहो ना कौन ऐसे गाए, जग भी संग गुनगुनाए। जग भी संग गुनगुनाए। हाँ, कभी नई भोर जैसी, कभी शाम सी हंसी, कभी पवन सी सुहानी, वो बहारों में बसी। भरती उड़ान वो, धरती समान वो, प्रीत और त्याग की एक पहचान वो। क्षण से वो सामने आ जाए। देखो ना रैन के ये साए, उसकी लौ से जगमगाए। जग भी संग